participated in the district parades. Students also participated in National Jamboree Camp. Every year, 100 students of our institutions are being trained in NCC training camps under the supervision of ANO Mr. Sheikh Bashir Ahmed, along with 3 Karnataka Air Squadron of NCC Unit Bidar. This year, 58 cadets have been sent to attend the inter-battalion cultural camp held at Ballari district. These cadets will take a certificate exam in the month of February 24, which will help the students for their placements in the future. Teachers are also the learners. Staying updated is the key success in any field, especially in education. Our teachers constantly strive to be updated by attending various workshops and training programs. 5th September, that is the Teachers' Day, is not just a formal celebration of Guru Nanak Group of Institutions. It is a great occasion to acknowledge the sincere services of the teachers to the institutions. We have the pioneer staff working with us for more than 40 plus years. Every Teachers' Day, the entire staff of all our institutions gather together under one roof, and the best teachers are honored with respect and appreciation. This year, on Teachers' Day, we have honored the teaching faculty from different institutions in Kalyana Karnataka region with Kalyana Karnataka Award for their best services in the field of education. Gone are the days when education meant spending 6 or more hours of the days in a classroom with a traditionally equipped blackboard, some chalk pieces and benches. The present Indian schools are the product of technologically evolving education system. I am happy to inform that Guru Nanak Group of Institutions are now digitalized in all aspects. Nursery to 12th standard classrooms are equipped with interactive panels costing about 1.5 lakh each. We have fixed 30 such panels in this campus with the internet connection in each classroom. It provides easy access to wide variety of resources and has made teaching learning process more interactive, engaging the attention of the students for a longer period. I am also happy to announce that this year GNPS has collaborated with new digital platform called EduDriss. It is a holistic, brain-friendly, cloud-based learning platform for CBSE schools. Teachers can teach efficiently through blended active learning engagements. Students can grasp concepts deeper and faster. This will help parents to stay abreast of the latest research in child development, child psychology, and the overall development. The students can also take assessments at home, which is monitored by the respective subject teachers to assess the areas where the student is unable to perform well. And once the teacher is able to monitor the performance of the student of where he is lagging, which concept he is not able to understand, the teacher repeats the concept again to make the student understand and perform better. We have already conducted workshops for all our teachers, students and parents as well. So a good number of parents have participated in this workshop, but those who have not participated, I would request them to again give us a date so that we can arrange a workshop for them once again. We have upgraded our infrastructure facilities with robotic lab, computer lab, well-equipped library, high-speed internet connection, and equipped all the classrooms with advanced surveillance cameras. Our students have participated in international robotic competition, Technozian, held in Delhi in July 2023. We have the most colorful, attractive, fully air-conditioned and well-equipped classrooms for pre-primary section, with an access of the classroom teaching to the parents in their cell phones.
I'm very happy to announce a few more additions to our Guru Nanak group of institutions. I'm very happy to announce that this year we have started a new branch of Guru Nanak Public School in Aurad, and we are happy that we had 250 admissions in the first year itself. And this year we are very lucky to have 1200 admissions in all our schools. Guru Nanak PU College is going to be relocated in 2 acres of land. Guru Nanak Public ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಂಫೋನಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಎನ್ಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರೇ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಹೋದರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಕೌರ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಬೀದರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಆರಿಫ್ ಅಡಿ ಅವರೇ, ಎನ್ ರಾಜು ಅವರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ತೀನಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹಳಷ್ಟವ. ಇಲ್ಲಿ ಓದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲಿ, IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬೆಳೆದು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಗುರು ನಾನಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಟೀಚರ್ಸು, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಭ್ಯತೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ದೊರಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತಾರೆ. ಎಕಾನಮಿ ಇದೆ, ಹೈ ಎಕಾನಮಿ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಗುರು ನಾನಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಹೈಟೆಕ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೈಟೆಕ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗುರು ನಾನಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನಿತರದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹಂಗಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೇಡಮ್ छोटे पैसे लिखते हैं। जब मैं मेरे बेटे को छोड़ने आता था, जब भी ऐसे थे, आप भी ऐसे थे। आपका राज क्या है बताना पड़ता है। कि मैं तकरीबन बहुत साल से देखता हूँ मैडम वैसे कि वैसे है, थोड़ा लोगों को भगवान का देन रहता है, वैसा हमारे प्रिंसिपल मैडम को है बोलकर मैं समझता हूँ। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल वो रहते कोई इंस्टीट्यूशन या कॉलेज स्कूल चलता है, उसी तरह इस कॉलेज को, स्कूल को
अच्छे प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव मिले बोलकर इतना ऊंचाई तक ये अपना गुरु नानक ट्रस्ट के नीचे जो भी इंस्टीट्यूशन आते हैं बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गए हैं। मैं इतना ही कहता हूँ, जो है पेरेंट्स आए हैं, आपके बच्चे ही आपका असेट्स है, आपके बच्चे ही आपका असेट्स है। उनको उनकी ये सुपर युग है, ये मोबाइल युग है, इसमें बच्चों को हमारे को एडजस्ट होने में बहुत तकलीफ हो रहा है। उनको डेली कुछ काउंसलिंग करो, क्या चाहिए आपको, क्यों नहीं पढ़ रहा, जो नहीं पढ़ रहा उनके लिए बता रहा हूँ डिफिकल्टीज क्या है। हम ज़्यादा गाली देते रहते तो उनका उल्टा जाता है। मेरा रिक्वेस्ट है कि उनसे हम एडजस्ट होना, ये टाइम अब आ गया है। पहले हम कुछ तो बोले तो चुप बैठते थे बच्चे, अब ऐसा नहीं। क्यों बोलते, थोड़े पूरे नहीं बोलते फ्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, फुल डिजिटलाइजेशन हो गया है। उसके लिए हम हमारे बच्चों को काउंसलिंग करना, पढ़ाई का हो या स्पोर्ट्स हो, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो उसका इंटरेस्ट है उसमें वो बच्चों को करना। पढ़ाई बुक वार्म्स होते हैं, वो आगे का आजू बाजू क्या है वो भी उस बच्चों को नहीं दिखता, क्योंकि उसके ऊपर ही हम पढ़ना वही हम बच्चों को सिखाते रहते हैं। पढ़ना अलावा भी बहुत सारे स्टडीज है, उसमें भी उसका माइंड किसमें है, तो क्या बनना चाह रहे लाइफ में दो रहना, एक गुरु वन बुरी। हर बच्चों को बुरी क्या है, गुरु कौन है, वो चॉइस करने का अपना बच्चों के हाथ में छोड़ना है। Today we are celebrating 48th annual day of Guru Nanak Public School. हमारे स्कूल के 48 इयर्स कंप्लीट हुए हैं और 2025 में ये गुरु नानक पब्लिक स्कूल का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन रहेगा। आज इस प्रोग्राम में हमारे बच्चे मोर देन 500 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी कुछ डांसेस एंड स्किट्स ये लोग कर रहे हैं। और उनका हमारा ये कल्चरल एक्टिविटी का मकसद ही यही है कि बच्चे परफॉर्म करें और एक मैसेज दे ऑडियंस को, पेरेंट्स को। तो जो भी इनका हम कल्चर, हमारे इंडियन कल्चर को हम प्रमोट करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंडियन डांसेस, हमारा कल्चर, फोक डांसेस करें। और जो स्किट्स भी वो कर रहे हैं 2-3, वो एक मैसेज के साथ है पब्लिक के लिए, और जब वो यहाँ से जाएंगे तो एक मैसेज साथ में लेके जाएंगे। सो आई कंग्रेचुलेट ऑल आवर स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो द पेरेंट्स फॉर एक्सटेंडिंग देयर सपोर्ट टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। मैसेज यही है कि हमारी जो पीढ़ी है सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि हम देखते हैं कि इतना ये लोग सोशल मीडिया में लगे हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि आजू बाजू उनके क्या हो रहा है। सो एक फॉल्स और इल्यूजन में बच्चे रह रहे हैं। तो हमारी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि बच्चों को मोबाइल्स और गैजेट से दूर रखें, सोशल मीडिया से दूर रखें।
लेके मैं निकला और आया, मार्ग दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मार्ग दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो